I'm good. Fine, sir. I'm Fine. good. How are you, sir? I'm good. I'm very good. अच्छा, कोई confusion है last class से? Okay. Hello, Firoz. How are you? Good afternoon, sir. I'm fine. Good afternoon. Good. Very good. Yes, sir. Very good. So should we wait for 2 more? Because 4 ही daily आते हैं, 4 ही लोग. Should we wait or should we start? I don't know. I think I should wait 2-3 more minutes so that Deepak and Chaitanya and Manvi may join us. Right. So today I have not framed the question. Just I'll start teaching because we have taken long time for in the fundamental rights, right? So थोड़ा सा हम लोग अब थोड़ा ना जल्दी करें, मतलब थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी करें. अब है भी नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट में टाइम लगेगा, स्पेशली पार्लियामेंट में, जुडिशरी में टाइम लगेगा, राइट? वी हैव टू एनालाइज द बोथ इंस्टीट्यूशन, ओके? अदरवाइज ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट स्टिल हम लोग बहुत पता नहीं शायद जनवरी से ही कर रहे हैं हम लोग, and it's March, right? So थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं पार्लियामेंट में, जैसे फंडामेंटल राइट में दिया वैसे ही पार्लियामेंट में एग्जैक्टली हमको ऐसे ही बिल्कुल आराम से पढ़ना है, एंड जुडिशरी में. और उसके बाद तो जैसे कमीशंस हैं, 2-3 कमीशन 4 कमीशन एक दिन में हो जाएंगे, ठीक है? आज हम कोशिश करेंगे कि फंडामेंटल राइट ये जो डीपीएसपी है उसको खत्म कर लें, राइट? एंड आई विल सजेस्ट यू दैट कि you should go through article 37 to 51. क्या आर्टिकल कहता है. अदरवाइज कुछ आर्टिकल में अभी यहाँ बहुत जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल है अभी मेंशन करूंगा आपके सामने, and will tell you why it is very much important. You should read. I mean, you should remember not the entire article but the keyword. Okay, like article 39A है तो free legal aid, इतना याद रखना है. Fine. Okay, Firoz, do you have any question to ask? No, sir. Any query? If you feel any difficulty in understanding. No, sir. सब कुछ ठीक है? You can understand it, right? Yes, sir. You're getting it? Yes, sir. I'll ask Okay. you, sir, when I'll have. Yeah, sure, 100%, 100%. You can write mail. If I am not available at class, you can just write a mail to me, right? I'll definitely. I have sent you one answer, sir. Did you check it? Yes, I have seen your. I'm just waiting for a few more answer, okay, and then I will give you in the next week. Each day for each candidate. Okay. So after class, I'll give 5 to 10 minutes to each candidate, but on different day. So Monday आपको दे दिया, Tuesday दीपक को दे दिया, Thursday Prince को दे दिया, ऐसे ही हम 1 by 1 clear करेंगे. Okay? Okay, sir. Yeah. Hi Deepak, good afternoon. No problem. By Saturday, if you kal Saturday na, by tomorrow evening you must send me everyone. जो क्वेश्चन आपके पास ड्यू है उसको भी लिख करके आप भेजिए. Chaitanya has not joined yet. Should I start then? Because it's 12:26. Okay, so today we are not going to analyze, we are not going to solve the question. Today I'm just going to teach you
introduce you the directive principles of state policy, the DPSP, right? What is philosophy of DPSP? मैंने बता दिया था कल कि कहाँ से आया है, कैसे कनेक्शन है DPSP का, कि आयरलैंड ने फ्रांस लिया, फ्रेंच ने कहाँ से लिया, फिर वहाँ से कहाँ से आया. The root was USSR, that actually the working class revolution. In Indian Constitution, it has been taken from Irish Constitution, and DPSP is a fundamental in the governance of the country. That is Article 37 says, right? And the DPSP contains positive obligation of the state. Okay, so if I say obligation of the state, then FR, fundamental right, is a negative obligation. Negative obligation of the state, and DPSP is a positive obligation. It is a positive obligation of the state. Right? Clear? Did you get what is negative obligation and what is positive obligation? कल मैं थोड़ा सा बताया था. If you have any confusion, just let me know, please. Firoz, what is negative obligation of the state? Firoz, what is negative obligation of the state? Yes, sir. Why fundamental right is a negative obligation of the state? Sir, negative obligation, sir, it refers to like refraining from an action, sir. Yeah, refraining from intervention, right? Refraining from intervention. Right? Yes, sir. Restricting a state from intervention. Here, it allows a state to intervene. That's why it is a positive. Very good. Very good. Fine. So the DPSP argues that state must secure a social order. Right? What DPSP says? It must secure a social order in which social, economic, and political justice, right, must inform all institutions of national life. That means the social, economic, and political justice must be reflected by the all institutions of the state. Fine? Are you writing or not? First लिखो, ऐसे मैंने लिखा है, ऐसे लिखो. First लिखो. DPSP is fundamental in the governance of country. Right? थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं. In order to make law and public policy. Right, write it. DPSP is the fundamental in the governance of country in order to make law and any public policy. Done? Just erasing it. The DPSP is the fundamental in the governance of country in order to make law and public policy. DPSP is the fundamental in the governance of country
पहला लाइन, in order to make law and public policy. मतलब ये है कि अगर इंडिया कोई भी लॉ बनाएगी या कोई भी पब्लिक पॉलिसी बनाएगी तो डीपीएसपी को ख्याल में रखेगी, ठीक है, डीपीएसपी को जरूर ध्यान में रखेगी। फाइन, फिरोज, दीपक, दूसरा लिखिए, सेकंड पॉइंट, डीपीएसपी contains positive obligation. Of the state. Third point, the state shall maintain social order and socio-economic and political justice must be reflected by all institutions of the state. Right. The state shall maintain social order. Right. The state shall maintain social order and socio-economic and political justice. And socio-economic and political justice must be reflected by the all institutions of the state. Done? यूपीएससी का फॉर्म आ गया, कौन कौन भर रहे हैं आप लोगों में से? दीपक, फिरोज एंड प्रिंस। यूपीएससी का फॉर्म कौन कौन भर रहा है? भर रहे हो आप? सब भर दिया। भर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सेंटर कहाँ डाला? दिल्ली? यस सर, दिल्ली। ओके। फिरोज, ऑप्शनल लैंग्वेज हिंदी, हिस्ट्री। लैंग्वेज सर वैसे तो मैं लैंग्वेज मेरी जो एग्जाम के दूंगा वो इंग्लिश में, बट वो है ना क्या कहते हैं इंडियन लैंग्वेज, वो हिंदी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ जी। फिरोज, fill it if you wish to sit. कंफ्यूजन नहीं रखना है, भरना है तो भरना है, नहीं भरना है अगर आपने माइंड सेट कर रखा है कि इस बार नहीं भरना है तो कोई बात नहीं है, बट इफ यू आर विलिंग टू सिट देन यू सिट, मस्ट सिट। थर्ड, फोर्थ लिखिए, DPSP serves the common good. DPSP serves the common good. Fourth point. Fifth, it declares India as a welfare state. It declares India as a welfare state. And institution of development. Institution of development or development administration, लिख सकते हैं। It declares India as a welfare state and institution of development.
or development administration, whatever you wish. No problem. बस आपको crux पकड़ना है. You can't remember everything. Nobody can remember everything. Fine, clear? Heroes, Prince, Deepak, if you're writing, just write it down. You know, बाद के लिए मत रखिए कि बाद में लिख लेंगे, बाद में हो जाएगा. Don't do it. Just okay. What do you mean by welfare state? Anyone? Prince? हेलो हाँ, welfare state का क्या मतलब होता है? सर वेलफेयर आई थिंक सो जहाँ पे हर तरीके की मतलब सब चीजें प्रोवाइड हो रही हो, जहाँ पे एजुकेशन मिले और ये सब Basic amenities, right? The basic services state provide yes, करती है ना? basic services. Basic Yes, services state provide करती है, हाँ? State provides basic services like education, right? Like health, right? Like pension, like social security. मतलब so, right? Fine? Okay. और ज्यादा नहीं पूछेगा वेलफेयर स्टेट से आप ज्यादा, ठीक है? Firoz, do you want to contribute? What is welfare state? Yes, sir. Welfare state which works for the welfare of the people and society. Right. Very good. Deepak, do you want to say something about the welfare state? Sir, it would be that the state ensures the socio-economic security of the people. Right. Fine. Good. But can you say USSR was a welfare state? Then, because USSR was also providing all kind of services, including employment, housing, road, everything. Deepak? This was the no. Sir? Why? Huh? Am I audible? Yes, you are. So can USSR can USSR fall into category of welfare state? Sir, was it a democratically elected state? No, it was not. Then it cannot. So, किस category में रखेंगे इसको? It was a socialistic state, I can say that. Yes, socialist state. Totalitarian. There's a different, name you can give, but from the perspective of these services, you can call socialist state. Welfare state का एक angle जो मैं आपको बता दूं, welfare state क्या करता है? Welfare state का concept आया है ब्रिटेन से, ओके? तो वेलफेयर स्टेट क्या करता है? एक तो मार्केट रेगुलेट करता है, ठीक है? दूसरा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाता है. डू यू नो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? एनीवन? देन यहां से जो पैसा मिलता है वो सर्विस में लगाता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है. There's three component, a basic component of welfare state. It regulates market because there are so many unfair means in the market regulation, the crony capitalism, and there is a progressive taxation. What is progressive taxation? Firoz? Firoz, are you aware of what is progressive taxation? Sir, no idea, sir. Clear. No idea. Okay, Prince, are you aware of what is progressive taxation?
हाँ, डन। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या है प्रिंस? यस सर। हाँ, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पता है क्या है? प्रोविजन टैक्सेशन सर माइट बी और माइट बी नॉट, कि थोड़ा सा। आपने इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा है? सर अभी इकोनॉमिक्स तो स्टार्ट नहीं हुआ, और वैसे भी अच्छा। +1 +2 में तो था ही नहीं ना, मेरा अच्छा। सब्जेक्ट ही नहीं था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो आप म्यूट कर लीजिए। दीपक, आई विल टेल यू, 2 मिनट में पता लगेगा। Sir, I दीपक, can try. yeah, you can try. Everyone can try, you know. Okay. Everyone should have equal opportunity to try. Yeah. Sir, it means that a lower amount of tax will be collected from the low-income people, and the taxes that will be collected, that will be used for the general welfare of the masses. Right. So अभी जैसे कैप है कि 3 लाख से ऊपर, 3 लाख से ऊपर कितना परसेंट लगता है? 5%। I'm not just giving example. Okay, 5 लाख तक कितना लगता है? 3 to 5 लाख तक मान लीजिए 5% लगता है, और 5 से 10 लाख तक कितना लगता है? मान लीजिए 10%। 10 से 12 साढ़े 12 लाख तक लगता है 20%, मान लीजिए। आई एम जस्ट गिविंग यू। 15 लाख से ऊपर लगता है 30%, मान लीजिए। फिर 25 लाख से ऊपर लगता है 35%। ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। जितना इनकम बढ़ेगा उतना टैक्सेशन भी बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ। दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ओके, सो टैक्सेशन इक्वल नहीं है। लोअर इनकम ग्रुप के लिए लोअर रेट ऑफ टैक्स है, हायर इनकम ग्रुप के लिए हायर इनकम टैक्स है। वो जो टैक्स की मनी आएगी वो सर्विस प्रोविजनिंग में काम आएगा। फाइन, क्लियर? Firoz, clear? Hi Manvi, good afternoon. How are you, Manvi? Are you fine now? Have you recovered or still recovering? Okay, so India has, you know, the DPSP declares India as a welfare state. Fine. The next point, क्या 5वां point होगा? Next point मुझे बता दीजिए। 6th point. Okay, 6th point. Right. मानवी, you are late, so आपको यहीं से शुरू करना पड़ेगा, फिर हम कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। राइट, तो 6th point is DPSP is not enforceable in the court. Right, DPSP is not enforceable in the court, but it is a fundamental. तो पहला पॉइंट में लिखा था कि DPSP is fundamental in the governance of country in order to make law and public policy. So DPSP is not enforceable. लिखिए फटाफट। So यहाँ लिख दीजिए, पहले लिख लीजिए, उसके बाद बताता हूँ। DPSP is not enforceable in the court. हो जाए तो बता दीजिएगा। No, it's not okay. Okay, Manvi. No, sorry, it's okay. No problem. Yeah. Write down DPSP is a set of socio-economic rights. DPSP is a set of socio-economic rights. 8th point, it contains blend of or mixture of Gandhian philosophy and socialist philosophy.
Fine. 8th point. DPSP is not enforceable in the court. DPSP is a set of socio-economic rights. It contains blend of Gandhian philosophy and socialist philosophy. हो जाए तो बताइएगा. Very good, very good. So no liberal philosophy, right? Deepak, just to unmute your क्या नाम है, microphone. Tell me which article? No, Lakshmikant. You know, Lakshmikant is not a. Which article is a liberal philosophy? Yeah. Sir, can Article 44? No. Or early childhood care education for all? It is positive obligation. It is not negative obligation. All negative obligation is a liberal philosophy. Okay. And DPSP doesn't contain negative obligation on the state. Okay, sir. Right? So even Article 44 gives state to provide freedom to whom? Women. Right? For example, Hindu Code Bill, you know, Hindu Succession Act, Hindu Marriage Act, या Triple Talaq Act, जो भी ये है, it is in process of making, you know, UCC. Right, Deepak? If you have argument come, and I welcome argument. It is well discussed. No, it is well discussed. Just one clarification, sir. So Yeah. liberal actually has to do with negative obligations of the state, right? Right. So negative rights मैंने पढ़ा है, negative rights, negative liberty, सारे liberal philosophy है. Yes, sir. Noted. Fine? हाँ, तो आप उसको लेकर ना चले कि अगर उसमें लिखा हुआ है, क्या नाम है उसका, वो जो लक्ष्मीकांत में, it's not true, right? There is no liberal philosophy. Right? Okay. So लक्ष्मीकांत कंफ्यूज बहुत करता है चीजों को लेके. वो तो करता है, तभी तो हम यहाँ पे उसको आपको क्लियर करने के लिए. वही चीज जो मैं पहले पढ़ता था ना लक्ष्मीकांत, तो काफी सारी चीजें ऐसी होती थी कि पता ही नहीं लगता था कि ये किस चीज से रिलेट करके बोल रहे हैं. राइट. ठीक है, तो इसीलिए हम हैं यहाँ पर आपको ये करने, क्लैरिफिकेशन देने के लिए. आपको कुछ चीजें वहां पर हैं जो ऐसा है कि उसे नहीं लिखा जाना चाहिए, तो आप मत लिखिएगा लिबरल फिलोसफी. गांधीयन फिलोसफी है, सोशलिस्ट फिलोसफी. चलिए आप एक पॉइंट और लिख लीजिए. इसमें कौन सा पॉइंट होगा, 8वां या 9वां? 9th पॉइंट. ओके, 9th पॉइंट लिखिए. DPSP is a set of positive rights. It is a set of positive rights. But fundamental right क्या है? वहां पे positive rights भी हैं और negative rights भी हैं. Right? DPSP is a set of positive rights. Done? हो जाए तो बताइएगा. फिरोज, confusion? Any confusion? Okay, done. मतलब D means done. Okay, fine, good. Any confusion, Firoz? Anyone? Manvi, clear है? No, sir. Okay, any confusion you ask me, no problem. Now come to the comparison between fundamental rights and DPSP. Comparison between fundamental rights and DPSP. The first point is FR is justiciable एक चीज इसमें और बताऊं मैं, 10th point बता दूं. It would be little extra to you, but information.
Okay. DPSP is known as second generation of rights. अब बोलेंगे सर सेकंड जनरेशन, पहला जनरेशन कौन सा था? ऑफ कोर्स दिमाग में आएगा कि यार ये फर्स्ट सेकंड जनरेशन है, तो सेकंड फर्स्ट जनरेशन क्या था? जितने फंडामेंटल राइट्स हैं, नेगेटिव राइट्स, वो सारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स कहलाते हैं. फाइन. फर्स्ट जनरेशन राइट्स का जो ओरिजिन है वो ब्रिटेन है. सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स के जो ओरिजिन है डीपीएसपी का, वो यूएसएसआर है, सोशलिस्ट फिलॉसफी है. जो लिबरल फिलॉसफी है उसको फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स बोलते हैं. फाइन, क्लियर? मानवी, कोई कंफ्यूजन? बोलेंगे सर थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स भी है. जी हाँ, थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स भी है. अगर आप लोग सुनना चाहेंगे तो एक एक लाइन में मैं बता दूंगा. 4 जनरेशन ऑफ राइट्स है. तो फर्स्ट बता देता हूं कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स क्या है? लिबरल फिलॉसफी. जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं आपके पास, राइट टू आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, ये सब फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स से आता है. इसका जो शुरुआती है, जो भी नेचुरल राइट्स का, वो ओरिजिन है ब्रिटेन. जो लिबरल फिलॉसफी है, बेसिकली जॉन लॉक, ठीक है, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेएस मिल, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ राइट्स है. सेकेंड जनरेशन ऑफ राइट्स है सोशलिस्ट फिलॉसफी से आया है, राइट. जो भी सोशियो इकोनॉमिक राइट्स हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू हाउसिंग, राइट टू शेल्टर, हाउसिंग एक ही है. थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स है इन्वायरमेंटल राइट्स, द फेमिनिस्ट राइट्स. ओके, सो राइट, जो आपके पास राइट्स हैं टू गेट अ pollution free air and pollution free water. Fine. So the all set of environmental rights is known as third generation of rights. Right. Article 21 बहुत ही एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने उसको एनलार्ज कर दिया अलग अलग जजमेंट के द्वारा. स्पेशली आफ्टर मेन गांधी केस, सुप्रीम कोर्ट हैज रियली एनलार्ज्ड द आर्टिकल 21, राइट. सो दैट इज थर्ड जनरेशन. व्हाट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स? Fourth generation of rights, you know, the environmentalist basically talks about the rights of those who are still not, the rights of those who are not still born. So right of the future generation, right? So rights of the future generation is called कि मान लीजिए 200 साल बाद या 300 साल बाद जो जनरेशन आएगी उसके लिए क्या बच जाएगा. The sustainable development basically talks about fourth generation and third generation of rights. Right, yes. Yeah, sustainable rights. So जो sustainable development का concept है वो थर्ड और फोर्थ जनरेशन ऑफ राइट्स के बात करती है. ये दोनों जनरेशन पुराने हो गए. फाइन, गॉट इट द पॉइंट? That was extra from my side. Now, right, FR is justiciable, but DPSP is not. That is first relationship. Not it down. FR is justiciable, but DPSP is not. डन? लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइएगा तो फिर हम आपको जल्दी ले पाएंगे. मैं करता हूँ. डन? वेरी गुड. नाउ राइट, द इम्प्लीमेंटेशन
the implementation of DPSP must satisfy that it is not violating FR, fundamental rights. The implementation of DPSP must satisfy that it is not violating fundamental rights. It was the Supreme Court judgment in, state of Madras versus, Champakam Dorairajan. Champakam Dorairajan. Fine. So this was judgment. Who was the judge? S.R. Das. You don't need to know that. The same S.R. Das, when he became judge, in the Supreme Court, he just ruled out his own judgment. Deepak, are you aware of Champakam Dorairajan? Who was he? So yeah, in reference to Article 15, Clause 4, you have taught us the provisions for the socially and educationally backward class of citizens. Right. Or for the scheduled caste and scheduled tribes. Right. So I think that was added as part of the Champakam Dorairajan versus Yeah. Exactly. But do you know, she filed a writ petition for that Madras, there was some medical institution in which the seat was reserved, right? But she was not applicant. अगर मान लो जी कि यूपीएससी में मैं अप्लाई ना करूं, लेकिन यूपीएससी में कुछ ऐसा रूल्स है, उसके लिए मैं रिट फाइल करने चला गया, होता है ना? आप देखेंगे सुब्रमण्यम स्वामी या प्रशांत भूषण, ये ऐसे लोग हैं जो रिट फाइल करने के लिए फेमस है. तो सी वाज दैट काइंड, the same judge, you don't need to write this, but write this. The implementation of DPSP must satisfy that it is valid. It should not violate. Satisfy that it should not violate fundamental rights. I mean, it is violating. Oh my God. That it should not violate. It should not violating fundamental. It is not violating fundamental rights, or it should not violate fundamental rights, whatever you want to write. Language. It should not violate fundamental rights. Done. जल्दी हो जाए तो बताइए. प्रिंस, मानवी, फिरोज. हो गया मानवी? या लिख ही रही है, छूटना नहीं चाहिए किसी का. Done, Manvi? Should I erase it? Okay. So the next point is लिख लीजिए. कौन सा पॉइंट? फोर्थ पॉइंट होगा, राइट? लिख लीजिए. थर्ड होगा पॉइंट. ओके. थर्ड पॉइंट लिखिए. Later, the Supreme Court, the SC, held that the FR and the DPSP is complementary and supplementary to each other. Complementary and
supplementary to each other. Same judge ने ये judgment दिया था. Later, the Supreme Court held that FR and the fundamental right is complementary and supplementary to each other, and they are equally important. They are equally important. Later, the Supreme Court held that the fundamental right and the DPSP is complementary and supplementary to each other. What do you mean? एक दूसरे को help करते हैं, एक दूसरे को complement कर रहा है, right? They are very important. Both are important. For example, बचपन में हिंदी मीडियम में किसने पढ़ा है? किसी ने पढ़ा हो तो जैसे हमें विलोम शब्द सिखाया जाता है ना, तो उसमें बताया जाता है कि आकाश का पाताल, हाँ, दिन का रात और महिला का पुरुष, राइट? बताया जाता है स्कूल में विलोम शब्द में जब हिंदी व्याकरण हम लोग पढ़ते हैं, बट पुरुष और महिला कभी अपोजिट नहीं है. दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंटरी टू ईच अदर, राइट? वन नीड्स अनदर, अनदर नीड्स वन, both helps each other. It is a very much harmonical relationship between man and woman, right? It is not antagonistic, it is not opposite. Fine. So that is the same here. You can apply both have equal importance. That's Supreme Court says about the FR and DPSP. Yes, there's no bargaining. Firoz, got it? Got the point? Okay. Done? लिख लिया फिरोज? You have you noted down? Okay, fine. I think everyone has noted down. थोड़ा सा जल्दी लिखिए प्लीज, और ताकि मैं आपका कोर्स खत्म करूं टाइम पे. आप लोग दे रहे हैं, it's my responsibility to finish on the time and everything. It's not कि ये अच्छे से करा दिया वो बेकार से. Everyone, everything लिखिए. अब फोर्थ पॉइंट होगा, सिक्स्थ पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट होगा? फोर्थ. ओके, लिखिए. इन मिनर्वा मिल्स लिमिटेड versus Union of India, the SC held that there should be harmony and balance. There should be harmony and balance between FR and the DPSP, right? And it is an essential features of Indian Constitution, of the basic structure. तो दोनों का हार्मोनी जो है वो भी एक बेसिक पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है. Write it down. If you have any confusion, you just ask me. The Minerva Mills Limited versus Union of India, the Supreme Court held that there should be harmony and balance between the FR and the DPSP, and it is an essential of the basic structure of the Constitution. Fine. Done?
लिखते ही मुझे बता दीजिए, राइट, सो दैट आई कैन इरेज एंड रीस्टार्ट राइटिंग. Very good. Firoz done? It will help me, right? Right. Very good. अब कौन सा पॉइंट था, 4th था या 5th होगा यार, मैं भूल ही जाता हूँ. 5th पॉइंट होगा. दीपक प्लीज हेल्प मी. 6th पॉइंट. ओके, 6th पॉइंट लिखिए. नॉट द मत लिखिए, लिखिए. Granville Austin in his book Indian Constitution Cornerstone of Nation of a Nation argued that FR and DPSP is a conscience of Indian Constitution. Granville Austin in his book इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे कॉलम है, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ अ नेशन. इस किताब में उन्होंने क्या कहा है, फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी टुगेदर कॉल्ड एज अ कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हो जाए तो बता दीजिएगा बस मुझे. ओके, ग्रैनविल ऑस्टिन इन हिज बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉलन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, ये किताब आई थी 1960s 70s में, 66 में आई थी पब्लिकेशन. ग्रैनविल ऑस्टिन इन हिज बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन argued that fundamental right and DPSP is a conscience of Indian Constitution. Indian Constitution का conscience है क्या? Fundamental rights and DPSP. Granville Austin in his book Indian Constitution Cornerstone of a Nation argued that fundamental rights and DPSP is constitute a conscience of Indian Constitution. Clear? Done? लिख लिया दीपक. Prince Firoz. Has everyone done? But very good. Very good. Now come. The same author. मैं किताब का नाम नहीं लिखूंगा, बस ऑथर का नाम लिखूंगा. ग्रैनविल ऑस्टिन said that India's constitution is a social document. India's constitution is first and foremost a social document. या सिंपल लिख लीजिए, India's constitution is a social document. Right? Seventh point, the Kesavanand Bharti case, Kesavanand Bharti case and Minerva Mills case also argued
that Constitution is a social document. Indian Constitution is a social document. If you're done, let me know. Very good, Deepak. Firoz, Prince. Very good. Yes, Firoz. Do you want to ask anything? Just कुछ भी पूछना है, unmute yourself and then ask. तीन ही चार लोग तो आते हो यार. अगर 50-60 होता तो फिर मैं तो 3-4 लोग में तो हम फ्रेंडली पढ़ रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं. Okay. Now next point, I forgot again what point. The next point. अच्छा, 9 point. Okay, 9th point. Article 37 of DPSP is core for India's governance. Right? And it must be read, or it must be, oh no. Article 37, 1 minute, wait. Article 37 of DPSP is core of the India's governance, right? The fundamental right, the FR, should be interpreted in the light of DPSP. Fine. Article 37 of DPSP is core for India's governance. FR should be interpreted in the light of DPSP. That this article says, right? Not an exact statement, but the meaning. Again, actually, Supreme Court has also said the same thing, especially after 80s. You see, the entire PIL is based on this formula. Done? Firoz, done? Okay. Now, 11th point, ये केस मैंने आप लोग को लिखवाया है, जब आर्टिकल 21 बता रहा था. देखिए, in the Unikrishnan JP versus state of AP, oh, it is 10. Okay. The SC, देखिए, in the Unikrishnan JP versus state of AP, Andhra Pradesh, the Supreme Court SC held that the Article 45 and Article 41 is fundamental rights. Right? Later, education was included in the Article 21A. Fine?
लिख लीजिए इसको, बच्चा के लिखिए। द उनिकृष्णन जेपी, डन, वेरी गुड, बहुत फास्ट लिखते, फास्ट ही लिखना चाहिए, पता है, क्योंकि आपको उसमें टाइम नहीं मिलेगा। डन, वेरी गुड, वेरी गुड। और ये मैंने बता दिया आप लोग को, ऑब्लिगेशन है। FR is a negative obligation, already stated, no need to state again. FR is primarily negative rights, मतलब जो मैच्योर सेक्शन है फंडामेंटल राइट्स का वो नेगेटिव राइट्स है, अदरवाइज पॉजिटिव राइट्स है, बट DPSP is entirely पॉजिटिव राइट्स। फाइन, सो FR वो मैंने लिखा दिया है क्या शायद, फंडामेंटल जब DPSP लिख लीजिए 11th point, right? FR is a set of negative as well as positive rights, right? But DPSP is a set of positive rights only, bas, positive rights only. मानवी आपका जो छूट गया आप देख लेंगे बाद में, हाँ यस लिख लीजिए, इसमें लिख लीजिए, फंडामेंटल राइट इज अ सेट ऑफ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव राइट्स, बट DPSP is a positive rights only. Done? Prince, Feroz, Manvi. Very good. Prince, done, Prince? Manvi, आप भी लिख लीजिए, आपने अच्छा लिखिए। Fundamental right is FR is a set of negative as well as positive rights, but DPSP is a set of positive rights. Manvi, done? Wait करना है तो सर मैं बाद में वीडियो देख लूंगी, क्योंकि मुझे ना वाईफाई में इश्यू हो रखा था, तो वो बुला रहा था, तो ठीक कर रहा है। No problem. If you can, then no problem. हाँ, तो ये हो गया 11th पॉइंट था। चलिए हम इसको 12th पॉइंट कर लेते हैं। FR इज फर्स्ट जनरेशन, बता दिया आपको, फर्स्ट जनरेशन, एंड DPSP is second generation. हो गया, और एक और पॉइंट लिखिए, 13 पॉइंट और एक लिख लीजिए। FR provides political democracy, but DPSP provides socio-economic democracy. Socio-economic democracy. Done. फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP का कंपैरिजन हो गया। अगर आ जाए तो आप बस लिखना है आपको, ठीक है। आपको एग्जांपल भी दे सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड्स पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, बट DPSP प्रोवाइड्स socio-economic democracy, social democracy as well as economic democracy. Done? If you're done, then all right, fine. Now see, write 42nd amendment and DPSP. याद रखिएगा कि 42nd amendment में 3 जोड़ा गया था, 39A, 43A and 48A.
39A talks about equal justice and free legal aid. 43A talks about participation of workers in the management of industries. 48 talks about protection and improvement of environment and safeguarding of forest and wildlife. Right? Note it down. जैसे अजित के उतार दीजिए. 42nd Amendment and DPSP added 3 DPSP, actually 39A, 43A and 48A. तो अगर आपको पूछ ले कि 42nd Amendment में कौन से जुड़े गए थे, तो आपको बस A याद रखना है, ठीक है? 39A, 43A and 48A. और वहां पे ऑप्शंस हो गए 44, 45, 43 भी दे देगा, 48 भी दे देगा, 48A भी दे देगा, राइट? अगर आता है तो यू कैन जस्ट एलिमिनेट. सो सब A है, जस्ट 39A, 43A and 48A. One talks about free legal aid, second talks about labor participation in industry, and third talks about protection of environment and wildlife. Done? Very good. Firoz, Manvi, Deepak. If you're done, then let me know. If you have finished all these three. Very important. Very good. Done, Deepak? Okay. Okay, Manvi, or you will see the video again, no problem. Now, right, see 44th Amendment and DPSP, right? 44th Amendment and DPSP. यहाँ पे clause 38(1) and 38(2) जोड़ा गया था. क्या कहा गया था इसमें? States shall promote welfare of the people by securing a social order in which social, economic and political justice must inform all institutions of national life. जो मैंने आपको philosophy of DPSP में भी बताया था. क्योंकि securing social, social order as per socio-economic and political justice. Second, states shall minimize inequality and eliminate inequality, right? Facilities and opportunities. जितने भी inequality की बात करी है वो 38(2) में है. It's about inequality. बस ये याद रखना है 38(2) inequality. Right? 38(1) social justice. इतना आप याद रख लीजिए, याद हो जाएगा. And social justice is a big term. I have already told you. 38(1) social justice, 38(2) inequality. यानी state shall minimize inequality and promote equality, right? Eliminate inequalities. ऐसे करके आपको याद रखना है. But ये हेल्प करेगा आपको एलिमिनेशन में. डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन डीपीएसपी से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको एलिमिनेशन में ये हेल्प करेगा, क्योंकि एलिमिनेशन प्रोसेस काम आता है वहां पर, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा. तुरंत बना लेंगे आप. डन? फिरोज. Okay, now see the 86th Amendment Act, right? So what 86th Amendment Act did? 86th Amendment Act added Article 21A in the fundamental rights, and it modified Article 45, right? So early childhood care. उन्नीकृष्णन तो 1993 में आया था. उन्नीकृष्णन तो कोर्ट जजमेंट देता है, उसको तुरंत लागू तो नहीं हो पाया था. उन्नीकृष्णन 1993 में आया था. ओके, यस, वो 1993 में ही आया था. आपको मैंने बताया था जब आर्टिकल 21A बताया था. तो
right? So it is 6th Constitutional Amendment Act, modified Article 45 and added Article 21A. Fine. So what is Article 21A? Firoj? Anyone can reply. Unmute yourself and tell me. The right of education. Yeah, right to education at the age of 6 to 40. Okay, 6 to 14, right? 6 to 14. यहाँ पे क्या है? Below the age of 6. Okay. 97th Constitutional Amendment Act, promotion of cooperative society. 43B को ऐड किया गया था, ठीक है? और उधर 19th 1C या D, to form union or some, right? To form union or cooperative society, C, right? तो इतना डीप में नहीं जाएगा 91C, बट यहाँ पर जा सकता है कि ओके कौन सा ये DPSP में क्या है, इसका कहाँ पर है. Now can we go for Uniform Civil Code, or should I stop here? We can talk Uniform Civil Code on Monday. I thought Uniform Civil Code भी कर दूंगा and मैं आपको fundamental duties भी पढ़ा दूंगा आज में, but unfortunate DPSP तो नहीं जा पाऊंगा. But Uniform Civil, yes. Type of 44 amendment दिखाना sir. I think I miss 44th Amendment. सर ऊपर चले जाए. Yes, ये है ना? Yes. हाँ ठीक है सर, हो गया. ठीक है. Inequality and social justice. Okay sir. Fine. क्या किया जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड को? आप लोगों को बताया जाए या मंडे को बताया जाए? So I think Monday ठीक रहेगा, या तो फिर ब्रीफ कर दो थोड़ा सा बस. हाँ, बता देता हूँ. यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या? पहले बातचीत आप लोगों से पूछ लेता हूँ, है क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड? आपके दिमाग में क्या है इसके बारे में परसेप्शन? प्रिंस मंडे को ही कर पाएंगे आज. Yes sir. हाँ, व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? सर मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये. अच्छा, नो प्रॉब्लम. फिरोज, what is Uniform Civil Code? Sir, I have no exact idea, but I think it should be related to uniform treatment of the civilian by law and order, something like that. No, that is Article 14 you are talking about, right? So civil code means it's not law, it is code, right? So law means law will treat equally everyone, is irrespective of religious group and religion, right? Religion, right? But here civil code has different angle. No problem. Yes, Deepak. Sir, Uniform Civil Code, as you said, it is just a code and not a law. Sir, it means the code actually seeks to apply certain standards on each, means on every citizen, regardless of their religion or any of their background. Right. So अगर हमारे लिए, अगर किसी हिंदू के लिए ये लॉ है कि वो एक शादी कर सकता है, means just giving an example, same law would be applied to other people also, regardless of their religion, either they belong to any denomination. Right. Very. It's a right. Uniform civic value. Uniform code for civil, a single uniform code for civils. Yeah. So uniform civic value. Yeah. Right. So for example, marriage. So if one marriage is allowed, right? But when you are going for the second marriage, you have to proceed with the legal proceeding, right? So पहले आपको divorce देना पड़ेगा, right? उसके बाद आप कर पाएंगे शादी, right? जो दोनों separate होके फिर से अपनी marry कर सकते हैं, no problem. But for the remarriage, there are procedure. You cannot trespass that. But there are personal law
for example, the Shariat law in Muslims, but that that is personal law, and and this is not applicable, was not applicable. Actually, triple talaq के बाद applicable हो गया कि ट्रिपल तलाक इलीगल है, बट दूसरी शादी करना भी इलीगल है. आई डोंट थिंक सो. सो हिंदू कोड बिल. हिंदू कोड बिल क्या था, आप लोगों ने सुना है कभी? क्या बताता हूं मैं. पहले एक आइडिया दे देता हूं 2 मिनट में. क्या हुआ? सर बाबा साहेब ने इस्तीफा दे दिया था ना इस. राइट. Who was the mastermind? Deepak. About this Hindu code bill. Yes, he was a staunch advocate. He framed it, but who was the mastermind? B.N. Rao. Sir, Benegal Singh Rao. Yes, B.N. Rao, the constitutional advisor. B.N. Rao and Ambedkar both framed it. Okay. Okay. And yes, he resigned from the government because Nehru was not willing to pass it. But later on, the Hindu Code Bill was passed, in a piecemeal, right? So Hindu Marriage Act, Hindu Succession Act, yes, 1956, yes. And through which Hindu community has been given a unified code. पहले हिंदू में भी था कि एक लोग 5-5 शादियां कर लेते. Right, and especially in Brahmins of Bengal and Bihar, it was the routine that the Brahmin used to marry more than one wife. I don't know about the South India, even UP. Yes, I don't know about the South India, and this law, restricted Brahmins not to marry, right? Or if you want to marry second time, then you have to go with a certain legal procedure, right? That we call divorce, right? You have to file divorce, then you can remarry again. So Hindu Code Bill given a unified code to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, but the Muslim were allowed to use personal law. Right, that is Shariat law, right? And the Shariat law allowed the polygamy, right? So that was of course, the Nehru's fault that he did not apply, uniform code bill. In Constituent Assembly, K.M. Monsi, there were 2 arguments against uniform civil code. 2 arguments बता देता हूँ, छोड़ दूँगा. एक तो आर्गुमेंट है कि ये वायलेट करता है आर्टिकल 25, और दूसरा आर्गुमेंट है ये इसके अगेंस्ट में कि इट वुड लीड टू टायरनी टू द माइनॉरिटी. ये माइनॉरिटी के ऊपर एक टायरनी बन जाएगी. दोनों आर्गुमेंट को खारिज किया था कौन? के एम मुंशी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, राइट? सो उसी आर्गुमेंट के साथ मैं अगले दिन क्लास शुरू करूंगा, मंडे को. दैट वुड बी बेटर. Fine. I'm just stopping. So I'll tell you what is Hindu Code Bill and what is characteristics of the the Uniform Civil Law. What would be the? Do you know any state who has applied UCC? Uniform Code Civil Code किस state में है अभी? Any idea? Goa. Yeah. So rest of the class, rest of the UCC we will discuss on Monday. Fine. So see you on Monday, and not this week, next week I'll take test, right? और हर दिन मैं क्वेश्चन बना के, एक्चुअली बहुत टाइम चला जाता है, मेरा भी टाइम चला जाता है और आपका भी टाइम चला जाता है, और कोर्स टाइम पे खत्म नहीं होगा, फाइन. सो अभी कुछ दिन हम क्वेश्चन को छोड़ देंगे और हम इसको करेंगे अच्छे से, पॉलिटी को पढ़ेंगे. सो सी यू ऑन मंडे.